Good morning, students. Good morning and welcome to the legal game presented by Unacademy. I'm Sarthak Sharma. I'm your legal reasoning expert at this wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient, and interesting. And yes, जितना wonderful ये platform है, उतने ही wonderful हमारे student. You all are equally wonderful. And yes, it's the most awaited session जो दो बार already postponed हो चुका है. But finally, I have come up with this class, the important legal affairs part 4. The important legal affairs part 4. So let's start with the class and before that let's switch on the live chats. चलिए देखते हैं आज लाइव चैट्स में मुझे आपसे क्या सीखने को मिलता है. The live chat is on my screen. Hi Vansh, good morning. So चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move forward. I hope I am clearly audible and visible to you. If yes, then just ping the affirmation in the live chats ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. चलिए let me give you a short intro of myself. I'm Sarthak Sharma and I have more than 2 years of teaching experience. I will rather say thank you, Vansh. Thanks for affirming that I am audible. I have more than 2 years of teaching experience, or I will rather say that I have more than 700 days of teaching experience for me because me for each day count. मेरे लिए हर एक दिन की वैल्यू है and yes, I am more than happy that today one more day is going to be added to my teaching experience. Guys, remember, experience can just be gained. Knowledge can be imparted. आप मुझे knowledge दे सकते हैं, मैं आपको knowledge दे सकता हूँ. But experience can just be gained. So yes, I will make sure कि मेरा experience आपके काम आए because yes, I have mentored more than 10,000 students. I will rather say that I have been companion with more than 10,000 students in their law school preparation journey. And a lot of my companions, a lot of my students have been to their target destination, to the benches of their dream Law College. So I hope you all are also eager to add your name to this list. The rankers produced under my companionship, under my mentorship for CLAT, SLAT, BLAT, GMILET, AILET, MHET, CUCET, it can be Allahabad University, all these entrance examinations, IP University or IP तो अब CLAT के through ही लेते हैं. So yes, for all those, I will be with you. I hope you have joined my Telegram group. If not, then you may join. The Telegram group link is on your screen also in the description box. You just need to click the link and join me on Telegram. Students, you should not afford to miss it. आपको इसको miss नहीं करना है. The mega marathon quiz on legal GK. On legal GK, I'm going to come up with a mega marathon quiz. As the name it is itself suggesting कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेगा मैराथन क्विज होने वाली है जिसमें हम आपकी लीगल जी के बूस्टअप करेंगे, टेस्ट करेंगे. वी विल टेस्ट योर प्रिपरेशन, वी विल प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली वी विल इम्पार्ट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल जी के इंफॉर्मेशन टू यू. तो डू ज्वाइन दिस सेशन. इसको मिस नहीं करना है. एट टुडे एट 8 p.m. in the evening, and the platform would be an Academy application, not YouTube. So an Academy application डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए. 5G का जमाना है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी. यू स्टिल हैव एग्जैक्टली 12 hours left for this quiz. तो चलिए प्रिपेयर कीजिए and meet. I hope to meet you all at 8 p.m. on the Unacademy app. The subscription, so yes, you can subscribe to an academy for 1 month, 3 months, 6, 9, 12, 18 or 24 months, whichever is more feasible to you. And by using the code SRT10, you can have an additional 10% discount. An additional 10% discount by using the code SRT10 in addition to the regular discount. There is no cost EMI as well on 6 months and a subscription. So you may go for it as well. Okay. Let's have a look over the unique features of an academy. As I've always said that U in an academy stands for uniqueness. And there are a lot more unique features. इतने सारे unique features हैं कि हम एक single screen पर showcase भी नहीं कर सकते हैं. So I have come up and before you with the top notch unique features of an academy. Just have a look over them. इनके अलावा और भी बहुत सारे unique features हैं and if you want to avail those unique features, subscription is the only doorway. Okay, students. Hardik, hi Hardik, good morning. You can also go for this unique feature. It's my personal favorite, the live quiz feature for the students. Here the students can obviously participate in a quiz. Participate तो आप किसी भी platform पर कर सकते हैं, but you can host your own quiz as well. You can host a quiz.
वंश, हार्दिक, अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की ऐसी नॉलेज है जो आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज योर ऑन क्विज, होस्ट योर ऑन क्विज एंड हेल्प योर फेलो मेट्स टू ग्रो। दूसरों की भी मदद कीजिए, बिकॉज नॉलेज इज द ओनली थिंग जो मल्टीप्लाई होती है बांटने से। व्हेन यू शेयर नॉलेज इट मल्टीप्लाइज। यस हार्दिक, नो पर्टिकुलर रीजन फॉर इट, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट थिंग, जस्ट it was it happened. Okay, an academy law aptitude test. Every Saturday at 11 a.m. we come up with an academy law aptitude test. It's a 60-minute, 60 question, 60 marks test, and every Saturday this test is conducted. I hope you are appearing for it, or if not, then चलिए हम Friday means Friday means you are just one day away from this ULET. आज Friday है, tomorrow is Saturday. कल 11 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड यस द वीकली T20 टेस्ट, इसको तो आप एवरी डे अटेंड कर सकते हैं, एवरी वीक डे, because the weekly T20 test is just a 20 minutes revision test for your everyday practice. It's a 20 minutes, 20 questions, 20 marks test from Monday to Friday. There are 5 different sections in your law entrance examination, and these are the 5 weekdays. Each weekday is devoted to a particular section. Monday is for English, Tuesday with quant, Wednesday logical reasoning, Thursday legal aptitude, Friday is current affairs and GK, and it is open for everyone. It is open for everyone, for those students who are paid users as well as for those students who are free. Okay, the last thing, let's have a look over the special class feature. भूलिएगा मत that special classes are free classes on Unacademy app. You just need to download the app and start attending the special classes either in live mode or in recorded mode. You can watch them in both. I've taken a lot of special classes. I'm going to take in future as well. So do attend my special classes. The link of my profile is in the description box. Click on the link, go on Unacademy app, find me out and watch my classes. They will definitely help. Let's start. सर मेरा स्कूल है 9 AM, so I'm going. By the way, I like the series. Thanks हार्दिक, it's all right. All the best. चलिए, खुशी हुई जानकर कि स्कूल्स वापस से ओपन अप होने लगे हैं. We hope this pandemic do not comes up with a third wave. Okay. Let's start with the class. The first important legal affair, which is actually very important. The Parliament has recently passed the bill. ये बिल अब पास हो चुका है, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है, to declare two food technology institutes as institutions of national importance. दो ऐसे फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रिसेंटली डिक्लेयर किया है पार्लियामेंट ने बाय पासिंग अ बिल. What are those two institutions? The first question is very important. You will find the answers here. So let's start from the very beginning. The Lok Sabha has recently passed National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2021. Hi Tisha, good morning. लोकसभा ने अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 पास किया है, which was already cleared by राज्यसभा. ओके, ऑन 15th March 2021 ओनली, और अब तो लोकसभा ने भी इसको क्लियर कर दिया है. नाउ दिस बिल इज एन एक्ट. ओके, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड एन एक्ट. बिल इज अ प्रपोज्ड लॉ एंड एक्ट इज अ पास्ड लॉ. बिल इज प्रपोज्ड, और जब वो प्रपोजल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है. पास मीन्स पास बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एट स्टेट लेवल प्रेजेंटेड बाय द असेंटेड बाय द गवर्नर. ओके, सो हर एक बिल एक्ट नहीं बन पाता है. जब वो बिल पास हो जाता है तो ही वो एक्ट बनता है, लेकिन हर एक एक्ट बिल होता है पहले, पास होने के बाद वो एक्ट बनता है. सो नाउ दिस बिल इज एन एक्ट, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिल्ड and management bill 2021, it seeks to provide the status of institution of national importance. Institutes of national importance बहुत important है, like IITs, IIMs, all of them are institutes of national importance. So National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana, and National Institute of Food Processing Technology, थंजावुर, तमिलनाडु. ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. Recently, two new institutes of national importance were added to the list by bringing this bill
by bringing this law, the National Institutes of Food Technology and Entrepreneurship and Management Bill 2021, and those two institutions are Kundli, Haryana में situated National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, NIFTEM, and NIFTEM is situated where? Question ये भी आ सकता है that where is NIFTEM situated? Haryana, in Haryana's Kundli district. And where is IIFPT, which is Institute of Food Processing Technology, is situated? It is in Tamil Nadu, Thanjavur. ये दोनों institutes of national importance declare कर दिए गए हैं. And these two institutions are under the ambit of Ministry of Food Processing Industries. Ministry of Food Processing Industries, and presently at the Government of India यूनियन लेवल पे इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं श्री पशुपति कुमार पारस. Shri Pashupati Kumar Paras is the Union Minister for Food Processing Industries. Are you clear? So these things you need to remember. First of all, the name of the bill. चलिए देखते हैं इस important legal affair से हमारे कितने questions बनते हैं. The name of the bill. Okay. The name of the institutions. 1, 2. The place where these institutions are located. One is in Tamil Nadu, another is in Haryana. And the name of the minister for food processing industries. These were important things that you need to remember. Let's move to the second news. Executive Chairman of NALSA, National Legal Service Authority, Justice UU Lalit, has recently said that all police stations should display boards informing right to legal aid and availability of free legal aid. ये अभी recently उन्होंने कहा है. क्यों कहा है? Just what is the date today? Today is 12th of November ना. Just 3 days back. 11/10/9 yes, ठीक 3 दिन पहले हमने नालसा का एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया. NALSA was established on 9th of November. In which year? NALSA was established in 9th November in 1995. And while delivering a speech, Executive Chairman जो नालसा के यूयू ललित हैं वही क्यों हैं? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा. Let's read this news again from the starting and then I will discuss. So Article 39A of the Indian Constitution, which is a DPSP, Part 4, ये Part 4 में DPSP है. It clearly states that it is the duty of the state to see that legal system promotes justice on the basis of equal opportunity for all citizens and availability of free legal aid. काफी बार क्वेश्चन है that free legal aid is given in which of the following provision of the Indian Constitution? The right answer is Article 39A. It was added by 42nd Amendment in 1976. 42nd Amendment से free legal aid को DPSP ऐड किया गया था. Okay, 39A of the Indian Constitution is DPSP, as I said, which is not justifiable. DPSPs are non-justified rights. Okay, DPSP are non-justiciable rights. Non-justifiable नहीं, non-justiciable होगा. The spelling is wrong. Non-justiciable in any court of law, even in case of non-fulfillment. As you all know, Isha, I will not teach logical reasoning. We will come up with a new teacher जो आपको specifically logical reasoning के लिए पढ़ाएंगे. So students, the DPSP जो कि Article 39A में आता है, free legal aid. I hope first of all that you know, मैंने आपको DPSP and fundamental rights के ऊपर relationship between DPSP and fundamental rights पर एक special class ली थी, in which I told you that DPSP are non-justiciable, means not enforceable in the court of law, not judicially enforceable. Even if the state, the government do not fulfill them, you cannot get them enforced in the court of law and bring a suit. Unlike fundamental rights that are justiciable. Article 38 clause 1 of the Indian Constitution is also important and related to this issue, in that provides that states shall promote welfare of the people by securing and protecting the social order, including justice. Means there shall be a welfare state. Welfare state means greatest good of greatest number of people. इसका आपको रूट आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में मिलेगा of the DPSP. And in the landmark judgment of Husainara Khatun versus State of Bihar, what happened in this case? In Husainara Khatun versus State of Bihar 1979, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स इन दिस केस.
Who is an under trial? An under trial is the person who had not been who had not been held guilty in the court of law yet, but जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है. The case is still pending. He is under trial. Means he is undergoing the trial in the court. The guilt or innocence is yet to be proven. So plight of under trial Supreme Court ने यहाँ पर observe किया that in a lot of cases, uh, the under trials were in the prison for a period which is even higher than that period जो उनको तब मिलता अगर वो सही टाइम पे कन्विक्ट हो जाते. मान लीजिए एक इंसान है ए, उसने चोरी की, मैक्सिमम सजा 3 साल की हो सकती है, केस 10 साल से चल रहा है, उसको बेल नहीं मिल पाई क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी फर्निश करने के पैसे ही नहीं थे. He did not had the money to furnish the bail bonds and that's why वो जेल में ही पड़ा है पिछले 10 साल से. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स रिकॉग्नाइज किया हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, दैट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा कि स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ बिहार बहुत सारे पुअर अंडर ट्रायल्स थे, वो जितने साल की अगर उन्हें सजा मिलती, अगर वो सही टाइम पे कन्विक्ट भी हो जाते, उससे ज्यादा वो ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं एज अंडर ट्रायल्स एंड द केस इज स्टिल पेंडिंग. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा दैट प्री लीगल एड एंड स्पीडी जस्टिस आर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21. हुसैनरा खातून में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 ए को रेड इन किया इन आर्टिकल 21. मींस आर्टिकल 39 ए को जस्टिशिएबल बना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 ए को इस केस में जस्टिशिएबल कर दिया बाय रीडिंग इट विद अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अंडर इट सुप्रीम कोर्ट मेड इट जस्टिशिएबल. आर यू क्लियर विद इट? चलिए थोड़ी सी नालसा की बात कर लेते हैं. एज आई टोल्ड यू, नालसा was established on 9th of November in 1995. Okay, and it was established, it is a statutory body which is established under the Legal Services Authority Act. Legal Services Authority Act of which year? 1987. याद रखिएगा, the executive chairman of NALSA is the second senior most judge of the Supreme Court after CJI. CJI के बाद जो second नंबर पे सबसे senior most judge होते हैं वो executive chairman होते हैं नालसा के. And at present, after the Chief Justice of India, the second senior most judge is Justice UU Lalit. And that's why he is going to be the next CJI. He's the next Chief Justice of India. Okay, when he will assume the office of Chief Justice of India in 2022, August 2022. और ये चीफ जस्टिस रहेंगे नवंबर 2022 तक जब रिटायर हो जाएंगे. So from August 2022 to November 2022, Justice UU Lalit is going to be the Chief Justice of India. He is the next Chief Justice. Chief Justice. A person is appointed as Chief Justice of India on the basis of seniority. I hope you know this thing. And seniority is not on the basis of age, but on the basis of time that the judge had been at the bench of Supreme Court. एक जज ने सुप्रीम कोर्ट में कितना समय बिताया उसके बेसिस पे उनकी सीनियरिटी डिसाइड होती है. देयर हैव बीन सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम जस्टिस एएन रे, उनको सीनियरिटी सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस बनाया गया था एंड इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था. Okay, so generally there is a rule that senior most judge would be CJI, and the next senior most judge, Justice UU Lalit, is going to be the next Chief Justice of India. Very important question. Okay, students, Ministry of Law and Justice, Government of India ने recently publish किए हैं. It has published Hindi translation of 13 major laws in India. Yes, Hindi translation of 13 major laws in India. सर जस्टिसेबल बनने से उससे जस्टिस मिल जाता है? जस्टिसेबल बनने से त्रिशा वो अगर जस्टिस नहीं मिलता है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर अ जस्टिसेबल राइट. ओके, फॉर अ जस्टिसेबल राइट, if the right is not fulfilled by the state, then you can go to the court, then you can go to the Supreme Court and file a writ petition. But for non-justiciable rights, you cannot go to the court even if it is not fulfilled. Justiciable rights are compulsion on the state. अगर state fulfill नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाकर शिकायत कर सकते हैं. You can file the case against the court, against the state. But in non-justiciable rights, these are not compulsory rights. The state may or may not. Justiciable rights state shall fulfill. करना ही पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. नॉन जस्टिसेबल राइट, द कोर्ट
the state may or may not fulfill. Because even if it do not fulfill, you cannot go to the court of law. These are non-justiciable, means not judicially enforceable. Justiciable means judicially enforceable. Yes, court में जा सकते हैं ऋषा. They can go to the court and file the complaint if it is a justiciable right. लाइक आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. बट अगर आपका कोई डीपीएसपी फुलफिल नहीं होता है, डीपीएसपी आर ऑल्सो राइट्स ऑफ सिटीजंस, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज द पावर ऑफ रिट पिटीशन इज ओनली फॉर पार्ट 3 नॉट फॉर पार्ट 4. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसेंटली पब्लिश किए हैं हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ 13 मेजर लॉज इन इंडिया. नाउ थोड़ा सा काम तो आपको भी करना पड़ेगा. ये 13 मेजर लॉज कौन से हैं, द लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 13 लॉज की लिस्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएगी ऑन गूगल. फाइंड इट आउट दैट व्हाट आर दोस 13 लॉज जिनकी हिंदी ट्रांसलेशन कॉपी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पब्लिश की है. So the Ministry of Law and Justice, Government of India has recently published Hindi translation of 13 major laws under the authority of Official Languages Act 1963. Remember, गूगल सबके पास है 13 लॉज कौन से हैं वो आपको बताने. चलिए 13 में से मैं 3 लॉज आपको बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है. दीज 13 लॉज इंक्लूड द 3 फार्म लॉज बिल्स एज वेल. जो 3 फार्म लॉज बिल हैं जो अब एक्ट बन चुके हैं, द फार्म लॉज एक्ट, that are also included in these 13 laws. So out of those 13 मैंने 3 laws तो आपको बता दिए. बाकी के 10 laws की list आपको go through करनी है. The question can come from any particular law. Okay? The question can directly come that out of the following, which law was recently published in Hindi translation by the Government of India, Ministry of Law and Justice? The right answer would be any of those 13 laws जो option में आपको मिलेगा. The 3 farm laws bill are also included. इनकी भी हिंदी ट्रांसलेशन कॉपी अभी पब्लिश हुई है. Okay, let's move to the fourth one. The Uttarakhand High Court has recently issued a notice to the state government on plea urging that state government should notify rules under the Anand Marriage Act 1909. Now ये पर्सनल लॉज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू पर्सनल लॉज. क्लियर? न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस न्यूज का सब्जेक्ट मैटर है, द आनंद मैरिज एक्ट 1909. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव a brief about this Anand marriage, that what is it. So Anand Karj literally means an act towards happiness, and it was introduced by Guru Amar Das ji. It was originally legalized in India through the passage of Anand Marriage Act of 1909, but is now governed by Sikh Rehat Maryada Sikh Code of Conduct and Conventions that was issued by Shiromani गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. सो एक चीज याद रखिएगा, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है. एक सिख मर्डर करे या फिर एक मुस्लिम मर्डर करे या फिर एक हिंदू मर्डर करे या एक क्रिश्चियन मर्डर करे, पारसी मर्डर करे, सबको सजा एक ही मिलेगी, सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी में मर्डर की. यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है बट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गोवा. गोवा के अलावा किसी भी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट देयर इन इज नॉट fulfilled yet. Uniform Civil Code is a DPSP na, and as I told you DPSP are non-justiciable, means optional. अगर स्टेट फुलफिल करती है वेल एंड गुड, स्टेट फुलफिल नहीं करती है तो भी आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते फुलफिल कराने के लिए. So yes, because there is no uniform civil code, so Sikhs have their own code of conduct, Hindus have their own, Muslims have their own. So the government of India passed this Anand Marriage Bill 2012, after which Sikhs are able to register their marriages under the Anand Act. आनंद मैरिज एक्ट के अंडर 2012 के बाद से सिक्स अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने लगे. बिफोर इट दे यूज्ड टू रजिस्टर देयर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ओनली. व्हाई? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इन हिंदू मैरिज एक्ट, द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इज नेगेटिव. कभी भी आप हिंदू लॉ में पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि हिंदूज कौन कौन है. इट सेज दैट हु ऑल आर नॉट हिंदूज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देम एवरीवन इज हिंदू. A person who is not a Jew, a Parsi, a Christian or a Muslim is a Hindu according to the Hindu Marriage Act. It means six chants, all of them comes under the definition of Hindu. So remember, the definition of Hindu is negative definition. Just like tort law has a negative definition, all civil wrongs which are not breach of contract or breach of trust are tort. Similarly, all humans who are not of this category, who are not from Muslim community, Christian community, Parsi community, Jew community, that are Hindus. So it gives a negative definition. राघवेंद्र सिंह चौहान इस वक्त
उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. रिमेंबर दिस नेम एज वेल. ओके, द फिफ्थ न्यूज. इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच भी है, याद रखिएगा. Okay, passes several orders in Hindi. Why it passed a lot of orders in Hindi? To mark celebration of हिंदी दिवस ऑन 14th ऑफ सितंबर. रिसेंटली 14th ऑफ सितंबर को हमने हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था, और हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, हिंदी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए लोगों को, द मध्य प्रदेश बेंच और द इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट केम अप with a total of 40 orders that were passed on that day in Hindi. Even Supreme Court had started uploading its judgment in regional languages on its web portal. आप इसके वेब पोर्टल को go through कर सकते हैं. 14th of September को we celebrate हिंदी दिवस as the same marks the adoption of Hindi. Why we celebrate 14th September as Hindi दिवस? Because on this date Hindi was adopted as one of the two official languages. There are two official languages in India, English and Hindi. And ये दोनों ही official languages adopt हुई थी 14th of September को. In the year 1949, when the constitution was under the process of making, under article 343, which is 8th and 8th schedule, you may say 8th schedule में languages given है, and there are a total of 22 official languages presently. Originally there were 14 languages. अब presently there are 22 official languages. Originally there were 14. Okay, so remember this thing, that why we celebrate Hindi Divas. And the last news for today. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir had inaugurated Jammu and Kashmir International Arbitration Center at Srinagar. I hope you know that what is arbitration. नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है ये, और एडीआर के ऊपर वी विल हैव अ स्पेशल क्लास soon, either on the app or the YouTube, but we will have a class on ADR, alternative dispute resolution. So arbitration is a type of ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है, इन 2020 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि वाइस गवर्नर होते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर श्रीनगर में एस्टेब्लिश किया था. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Okay. And the Lieutenant Governor, yes, in Republic of India, Lieutenant Governor is a constitutional head of 5 of the 8 union territories. There are a total of 8 union territories, जिसमें से 5 के constitutional head Lieutenant Governor ही होते हैं. The Lieutenant Governor is appointed by President of India for a term of 5 years and holds the office at the pleasure of President. 69th Constitution Amendment Act 1991 से Article 239 AA ऐड हुआ था. And why this is important? Because it deals with the LG of the National Capital Territory of Delhi. The Union Territory of Delhi is called. कभी सोचा है कि जब भी आप केसेस, when you will study the cases, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, जब दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल होता है तो कभी भी स्टेट ऑफ दिल्ली या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नहीं लिखा रहता. व्हाट इज दिस? ए वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. व्हाई? व्हाई? जैसे यूपी में अगर कोई क्राइम हुआ है तो if I have filed a writ petition against the UP government, take for example, then Sarthak versus State of UP case होगा. But if I file a writ petition against the Delhi government, then a Sarthak versus MCT of Delhi. Why not Union Territory of Delhi? Because Union Territory of Delhi को officially हम National Capital Territory of Delhi ही कहते हैं under Article 239, and the administrator thereof is appointed under Article 239 and is designated as Lieutenant Governor. 239 and 239 AA ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली की यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है. Guys, with this we come to the end of today's class, today's short and sweet session. And before ending, India's largest scholarship test is going to be conducted on 14th November, Teachers Day, just 2 days after from today. Do participate in it. It's a championship mock for CLAT 2022 and you have exciting prizes to win. So Sunday 14th of November, it would be live on Unacademy App. Do appear for this test. Rank 1 will get 100% scholarship plus 30%, 30 minutes one-to-one session with our top educators. And rank 2 to 5 will get 50% scholarship on subscription. Students, I hope you have
Enrolled for these courses, whichever batch is more feasible to you, go for it. On 10th of November, just 2 days back, a bilingual batch for 1 year comprehensive CLAT preparation was launched on an academy. So the name of it is Loscape. Legalicious, the name is itself suggesting it is going to be a delicious batch, an interesting batch for CLAT 2022, a 1 year program starting today on 12th of November. ये आज ही launch हो रहा है. So enroll before it's too late. And while enrolling, you can use the code SRT10. Rankers Batch 2.0, the name is itself suggesting again. The Rankers Batch aims to produce rankers for the CLAT 2023. It's a 2 year program, specifically in English, launching today. Know your exam, yes. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है करियर्स आफ्टर लॉ इन इंडिया बाय केशव मालपानी on 12th of November today at 5 p.m. in the evening. Do attend this session on the Unacademy app. Also, do attend at 8 p.m. 8 p.m. आज रात 8 बजे I will come up with the mega marathon quiz on legal GK. You should appear for it. Do participate and you have to win. Yes, it would be in form of a poll. And let's see who among you leads the leaderboard. I hope to see you all at 8 p.m. in the evening. The Bugs Bounty. If you find in any inappropriate content, you can report it using the Bugs Bounty. The link is in the description for it. With this, students, thank you. Have a great day. Who is the administrator of Delhi? LG. The Lieutenant Governor is the administrator of Delhi. Tisha. Okay. With this, we come to the end of this class. Thank you, students. Subscribe to this wonderful platform. Hit the bell icon. Bye bye and have